Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So we were talking about the management of the ascites. See that we had seen that there are, of course, what is called as the abdominal paracentesis should be done. And a brief account has been given previously about this paracentesis is concerned. And this is an important one for the house officer is concerned because they should do themselves. It is an easy procedure. Only things that you know why it is done, why it should be done, when it should be done, what are the indications, when it should be stopped, what are the contraindications, what are the complications. Now complications is this, first of all, the patient who has got this problem with the abdominal distension, very much higher distension, is very, in a anxiety state. He wants that it should be evacuated as soon as possible. He doesn't want any anesthesia, nothing. So, no anesthesia is needed. As I said previously, only the part should be properly identified and the needle inserted, and it should be drained as much as you can. I repeat that if it is 1 ml, 1 liter to 3 liters, the patient is not hypertensive and is not in shock states and creatinine is all right, then you can do safely this procedure, no problem. More than 3 liter, if you are evacuating 3 liter, and possibly the plasma expanders like normal saline or dextran or lingolectate can be given. If more than that, 5, 6 liters, more than that, it should be replaced by the salt-free albumin. And this is a debatable solution which is given here, but it is very, very effective because the recurrence rate of after the albumin is very low. The complication associated with the hypovolemic shock is very low, and there are really least chances of the renal compromisation. The complication associated with the when you insert the needle, that the persistent leak from the puncture site. The leakage occurs from the puncture site, the fluid ooze out from the area, and it will definitely, all of the area is soaked down, and it can cause problems there, infection, etc. So it should be sealed. Then abdominal wall hematoma can be formed if the patient has got, there are problems with the bleeding diathesis in the chronic liver diseases. So hematoma can be formed. So it should be the hematoma, small hematoma. Only what you do is just place the ice packs on it. The perforation of the bowel can become, because if you are doing and you become very, very very fast and quick, what we call in my language is vati, then you insert the needle straight forward and you can puncture the cecum and the ascending part of the colon. If you puncture it, a perforation occurs, and then you have to manage the perforation by surgical repair. So it is a dangerous complication. Introduction and infection into the peritoneal space will cause the peritonitis. So it should be very sterile procedure. Hypertension after a large volume paracentesis, because it should be hypertension occurs because extravascular fluid is gone, and it is the extravascular fluid is a part of the body interior. If it is gone, the patient go into the dehydration and the hypovolemic shock occurs. That is why we will give the normal saline or plasma expanders and preferably the salt-free albumin. Then, because of the fluids are removed, you are removing the fluids. Dilutional type of the hyponatremia can occur in these cases. The fluid is removed from the extravascular space. The intravascular space will show dilutional hyponatremia because you are taking the blood from the vein. The catheter fragment left in the abdominal wall cavity. The catheter, you have placed it
You remove it, a part of it is detached and left in the abdominal wall cavity. It will cause as a foreign body, and a foreign body giant reaction can occur in the abdomen. Now this part is actually, it is a practical part. It is asked in what is in our examination when we are doing in the in this part CPS part 2 examination, close examination. That what are the indication, what are the this and what is this and what is this, and then afterwards what are the complications associated and how will you manage this complication. 5 to 6 minutes table viva will be on in front of you. There is, and they put a needle and a catheter and a bag, so that you can identify that you have done before. If anybody has done before, he can recognize it easily. And part 2 candidates are definitely, they are master in this procedure. They should be. Although I have not done this procedure, I think not many times. I am not interested in the procedures myself is concerned, but you have to do it. And this is the research work which is written here. अब पढ़े लिखों वाली बात करें ना, पढ़े लिखों वाली बात यह है कि this is the recent studies about the paracentesis is that the patient with a large with a refractive ascites, या large हो या refractive हो, बार बार हो जाता है, recurrent, are usually initially managed by repeated large volume paracentesis. एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया. Several controlled clinical studies have demonstrated that the large volume paracentesis with the colloid replacement is rapid, safe and effective. You give dextran or you give the salt-free albumin, which are macromolecular structures. You can save this patient from the hypovolemic shock. The first study they have done in this serial is large volume paracentesis is 4 to 6 liters per day. But you have to replace with the albumin infusion. If you remove 1 liter, you will replace with the 8 gram of the albumin. Albumin should be given 8 gram when you remove 1 liter. If you remove 6 liter, 48 gram of the salt-free albumin should be given to the patient. So it is a very costly procedure. I think if you give 32 gram costs about 55,000 or 60,000 rupees. This is more effective and was associated with the fewer complications and shorter duration of hospitalization compared with the diuretic therapy. If you are doing diuretic therapy is going on before, I have already said, is a part of it. So it is the have got fewer complications. Only diuretic therapy will not work in cases of the large volume paracentesis. This study was followed by the other studies evaluating the efficacy, safety, speed of paracentesis. Here the hemodynamic changes following paracentesis and need for the colloid replacement therapy. Colloid replacement therapy should be done. The total paracentesis is generally safer than repeated paracentesis. Now, you go in the step by step, 1 लीटर निकाल लेते हैं, फिर 4 घंटे बाद निकाल लेंगे, फिर 4 घंटे बाद निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं करें. अगर निकालना है तो टोटल निकालें. ये बिल्कुल ही आप समझें कि नीडल में आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही कोई फ्लूइड नहीं आ रहा, तब उसे ब्लॉक कर दें. और उस हिसाब से जो है ना आपको फिर वो सॉल्ट फ्री एल्बुमिन देना होगा. कॉस्टली है लेकिन उसका बंदोबस्त कर देते हैं लोग, मिला के कर लेते हैं. ये इफेक्टिव है. Total paracentesis is generally safer than repeated paracentesis if volume expansion is administered post paracentesis. बाद में भी जो रह गया है आपके पास जितना सॉल्ट फ्री एल्बुमिन का पर आपने लगाना था 6, आपने लगाना था फर्स्ट कीजिए 6 लीटर निकाला है, आपको लगाना है 48 ग्राम. तो उसको जो है ना 4 ग्राम तो आप पहले दे देंगे पर लीटर और 4 ग्राम बाद में भी दे सकते हैं. Failure to give the volume expansion can lead to the post-paracentesis circulatory dysfunction. ये बड़ा important मसला है. With the impairment of the renal function and electrolyte disturbance will occur, hyponatremia will occur, hyperkalemia will occur, the serum creatinine will rise, and along with the blood urea. But this is the important point. This is the research work which we have done. It's very important research work.
Now, therapeutic paracentesis, this is the summary that following the paracentesis ascites occurs in majority, 93%, because you have to give the diuretic therapy along with it. If you discontinue diuretic therapy, it will form again. In comparison, spironolactone is the best agent used along with it. Only 18% of the patient treated with the spironolactone. Recurrence rate is very low if you give the spironolactone with total paracentesis. Now, reintroduction of the diuretics after paracentesis, usually within 1 to 2 days, does not appear to increase the risk of paracentesis dysfunction. And the thing is this, if you are using correct agent, not succinimide, it is the traching sparing type of a diuretic. It has got other action as well. Spironolactone is a magic drug. Aldosterone receptor inhibitors it is. The therapeutic paracentesis, further research has been going on. The changes, hemodynamic changes with the synthesis, that it has been assumed wrongly that the total paracentesis of the large volume of ascites, around 10 liters, lead to circulatory collapse. If you are replacing the salt-free albumin, then there will be no problem. The large volume paracentesis average of 10 liters over 2 to 4 hours cause a marked reduction in the abdominal and inferior vena cava pressure. And it will lead to the decreased atrial pressure, right? And an increase in the cardiac output. This is Stalling law. These hemodynamic changes are maximum at 3 hours. So do not worry about it. Because you are also replacing with the salt-free albumin. The pulmonary capillary wedge pressure decreases at 6 hours and continues to fall further in the absence of the colloid replacement. If you replace the colloid replacement, there will be no pulmonary hypotension. On average, the blood pressure decreases by about 8 millimeters of mercury. The severity of the post-paracentesis circulatory dysfunction correlates inversely with the patient's survival. So if nothing happens afterwards and everything is okay, fine, then this procedure is very, very safe. Otherwise, if there is anything, hypotension occur and the patient has got, what is known as the cardiac failure, and leading to the pre-renal azotemia, then the survival is poor. There are anecdotal reports of some patients with advanced liver disease developing quite severe hypertension post-paracentesis, but this rarely occurs. This is rarely reported. So it is a safe procedure. So one study shows the hemodynamic and the neurohumoral responses in 12 patients following the single less than 5 liter total paracentesis concluded that it was safe to omit the use of the albumin in these patients. If you are removing 3 liters or 4 or 5 liters, this study shows that the procedure is safe. However, many experts in the field have reservation on basing such a recommendation on a single small unrandomized study. Better to give the normal saline, better to give the plasma expanders, plasmine, instead of the salt-free albumin, which is cost effective. There's the International Ascites Club. It is a club. देखें हम ये क्लब कैसे बनाते हैं. हमारे यहाँ तो यहाँ छोटी बड़ी बड़ी बातों पर भी क्लब नहीं बनाते, वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी क्लब बना लेते हैं. रिकमेंड्स, इनकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये चैलेंज नहीं कर सकते आप इसको. दैट अ सिंथेटिक प्लाज्मा एक्सपेंडर इज यूज्ड लेस देन 5 लीटर. ये कहते हैं कि आप जो हैं आप प्लाज्मीन लगाते हैं ना, आप सॉल्ट फ्री भी नहीं लगाएं. लेस देन 5 लीटर है तो ना लगाएं. ये कहते हैं मोर देन 5 लीटर अगर हो जाए, से ज़्यादा हो जाए, तो उसके बाद जो है ना सॉल्ट फ्री एल्ब्यूमिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आप लगा सकते हैं. ये बड़ी अहम बात बता दी इन्होंने. लोग खौफज़दा हो रहे थे 3 लीटर निकाल के 4 लीटर निकाल के, तो खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है. There was a significantly high rate of renal impairment, significant fall in the serum sodium levels, वो नेचुरल होगा, and a marked activation of the renin, angiotensin and aldosterone system in those patients not treated with albumin. असल मसला ये है.
कि अगर आप सर्कुलेटरी जो है ना वो करते हैं स्टेबलाइजेशन तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक और स्टडी इसके साथ उन्होंने बताई है थेरापेटिक पैरासिटिस की। देयर इज स्टिल सम डिबेट अबाउट whether the volume expansion should be carried out using albumin or artificial plasma expanders. Analysis of the individual but relatively small and underpowered randomized control trials comparing dextran, इसकी बात की थी 70 और हिमैक्सल जो बाज़ार में मिलता है और जेलोफिसिन ये भी बाज़ार में मिलता है, with albumin suggest that these plasma expanders are clinically effective in the prevention of the hypernatremia and renal impairment. यानी पहले आप ये लगा दें हिमैक्सिल वगैरह या प्लाज्मीन या जेलोफिसिन और बाद में फिर एल्ब्यूमिन रिप्लेस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इसमें हाइपरनाट्रीमिया के चांसेस कम हो जाएंगे। However, the use of the artificial plasma expanders is associated with a significant greater activation. The renin, angiotensin, aldosterone का जो एक्सेस है उसको डिस्टर्ब करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जो एक्टिवेट करेंगे आपको मालूम है तो फिर क्या होगा कि टेंशन तो बढ़ेगा, साथ में क्या एक्शन होगा उसका। अब ये तो एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है डिस्टल कन्वर्टिव, सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा कंपनसेटरी के लिए, पोटाशियम को लॉस कर देगा। अब यहाँ मसला आएगा हाइपोकैलेमिया का, तो उसको भी देखना पड़ेगा फिर आपको। दिस डेटा सजेस्ट दैट इफ एनफ पेशेंट वर स्टडीड द एल्ब्यूमिन वुड प्रूव टू बी क्लिनिकली superior to Maxil or Galloficin or Dextrans. Indeed, the analysis data from all the published studies also suggest that albumin is more effective in the prevention of the hypernatremia. Only 8% noted. अब इसकी रिसर्च स्टडी भी यही शो ही करती हैं कि अगर आप कम लीटर में निकाल रहे हैं तो फिर तो आप प्लाज्मा एक्सपेंडर दे दें, अगर ज़्यादा लीटर में निकाल रहे हैं तो फिर एल्ब्यूमिन दे दें। बेहतर ये है कि अगर आप 5 लीटर अराउंड निकाल रहे हैं तो पहले जो है ना प्लाज्मा एक्सपेंडर दे दें और बाद में जो है ना सॉल्ट फ्री एल्ब्यूमिन भी दे दें, तो फिर हाइपरनाट्रीमिया के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। और उसकी डोज मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि भाई वो किस तरह करते हैं। जितना लीटर निकालें उसको आप रिप्लेस करें। हर 1 लीटर के ऊपर कितना कितना एल्ब्यूमिन लगाना है ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। 1 लीटर में जब आप निकालते हैं तो कितना बताया है, ये याद रखिए। बस तीसरी बात तो पीछे आपको क्लियर कट सारी स्लाइड्स में आपको मिलेगा कि पैरासिंथेसिस आप निकाल जब कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितना एल्ब्यूमिन दिया जाए 1 लीटर निकालने पर, ये मालूम होना चाहिए बस। ये आपको पता है तो आगे भी आएगा अभी दोबारा। 4 ग्राम हम दिखाते हैं हर लीटर के ऊपर, 4 ग्राम 1 लीटर पे। इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादातर कंसेंसस है कि वो ठीक है ये बात। ये कहते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस इन पेशेंट विद द सिरोसिस डिफाइंड एज मोर देन 4 लीटर रिमूव विद डॉक्यूमेंटेड सिरोसिस or any amount removed if creatinine is more than 1.5 gram per deciliter. Dosing recommendation is albumin 25% की होता है, 6 to 8 ग्राम पर लीटर ऑफ दिस removed, 4 to 6 to 8। हम 4 पे लगाते हैं, उनकी कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 6 to 8 ग्राम रिकमेंडेशन है इसकी। तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का ये पड़ जाएगा। फिर आखिरी जो चीज़ इसमें लिखी गई है वो रेजिस्टेंट जो हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाए तो आप ये काम तो करेंगे, पैरासिंथेसिस तो करेंगे, रिकरेंट टैपिंग करेंगे, एल्ब्यूमिन फ्री देंगे आप, और पेरिटोनियल वीनस शंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि पेरिटोनियम को वीनस के जो वेन है, बिग वेन है, उसके साथ आप कनेक्ट कर दें। मगर ये प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करेगा कि सारा का सारा फ्लूइड जो है ना वो लोड आएगा हार्ट के ऊपर राइट साइड पे, और राइट साइड पे हार्ट पे आएगा तो वो लेफ्ट साइड पे भी आएगा। फिर जो है वो ट्रांसजुगुलर या नॉर्मली ट्रांसजुगुलर इंट्रा हेपेटिक पोर्टल सिस्टमिक शंट टिप्स, ये जो है ना ब्रिज है, अगर ये कोई कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ प्रॉब्लम हेपेटिक इनकम्प्लेपिथी की है इसमें, लेकिन उस वक्त तक जब तक के लिवर ट्रांसप्लांटेशन ना हो जाए, जबकि आपके पास 3 सेंटर हैं जो ये काम कर रहे हैं और खौफजदा रहते हैं वो कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन आपके काम कर रहे हैं उसमें फेलियर रेट तो होता है।
अगर हाथ नहीं डालेंगे, अभी तक तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता था। लोगों ने तो यहाँ ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, रीनल ग्लैंड ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, थायराइड ट्रांसप्लांट कर लिए, लेकिन हम जो है खौफजदा हो जाते हैं। वो कौमें जो इंतहाई दलील कहलाती हैं, ख़राब कौमें हैं, वो ये काम करती रहती हैं। इनका डेली बेस के ऊपर ये पता नहीं कितने करते हैं, लेकिन हम यहाँ खौफजदा हो जाते हैं। जबकि हमारे पास जो सोशल वर्कर्स मौजूद हैं, पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे काम करने वाले तैयार नहीं, वो खौफजदा हो जाते हैं। ये एक डिस्कशन था जो मैंने किया, और काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है मैंने एसाइटिस पर। क्या है, कैसे होता है, पैथोजेनेसिस की टियोलॉजी क्या है, डिफरेंशियल क्या है, और CLD के साथ एसोसिएटेड एसाइटिस है, ख़ास तौर पर उसके ऊपर डिस्कशन किया है। पैरासेंटेसिस जो होता है वो कैसे करते हैं और उसको किस तरह करना चाहिए। अगर इसको आप गौर से सुन लें इस वीडियो को, तो आप प्रोसीजर इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। इंशाल्लाह अगला फिर जो है ना, जो कॉम्प्लिकेशन है इस पर डिस्कस होगी, जो आपके वार्ड में एडमिटेड है केसेस। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।